Hello students. Today we're going to talk about next topic, that is encryption. So when we're talking about encryption, so as the word say encryption, the process of scrambling a message in such a way that it is difficult, expecting or time consuming for an unauthorized person to unscramble, decrypt it. इट मीन्स अगर हम बात करें भी, जब हम मैसेज किसी को भेजते हैं तो इन बिटवीन वो मैसेज कोई और अनऑथराइज पर्सन उसको ना पढ़ पाए, ना देख पाए, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इंक्रिप्शन इज. व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट इंक्रिप्शन, यू विल सी अ डायग्राम बिलो. आप उसमें देख सकते हैं, यू विल सी अ डाटा इज सेंट. व्हेन अ डाटा इज सेंट, अ सीक्रेट की हैज बीन असाइंड. When a secret key is assigned, then that data will become encrypted. It means this data will be opened. ये डाटा तभी खुलेगा जब हम ये की लगाएंगे, अदरवाइज वो डाटा नहीं खुलेगा, decrypt नहीं होगा. That is basically encryption is. When we're talking about decryption, decryption means जो हमने डाटा लॉक किया है, अब उस डाटा को अनलॉक करना है. The process of unscrambling a message in such a way that it is understood by authorized person. जो डाटा हमने भेजा है वो ऑथराइज्ड पर्सन ही देख पाए, ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको समझ पाए, एक्सेस कर पाए. दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिक्रिप्शन इज. एंड इफ यू सी अ डायग्राम बिलो, यू विल सी ऑन here it is starting with encrypted data. It will be decrypted, mean खुल के दोबारा वापस हो जाएगा with the help of a key, a secret key. With the help of that, which will be done with the by the authorized person, that is called decryption. So encryption means डाटा को लॉक कर दिया with the help of a key, ताकि बीच वाला डाटा कोई और एक्सेस ना कर पाए. When I'm talking about decryption, डाटा को अनलॉक कर दिया with the help of a key, ताकि सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है वही डाटा को अनलॉक करके समझ पाए, कोई और डाटा उसको ना समझ पाए. So now we're talking about topic cryptography. It is a process of encryption and decryption of message or data by using different algorithms or softwares. So cryptography क्या है? Cryptography means ये एक प्रोसेस है जिसमें इंक्रिप्शन करते हैं और डिक्रिप्शन करते हैं मैसेज की. इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ मैसेज और डाटा with the help of different algorithms and software. एल्गोरिदम की मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से. When you see a diagram below, ठीक है, a sender has sent a data, sender ने डाटा भेजा, ठीक है. When a data is sent, it is with the help of algorithm, it is encrypted. जब डाटा को encrypt कर दिया गया, लॉक कर दिया गया with the help of algorithm, ठीक है जी, तो that data becomes a cipher text. जो जब डाटा हम लॉक कर देते हैं, encrypt करते हैं, उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं cipher text. तो दैट डाटा इज सेंड थ्रू अ नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू भेजा गया, उसके बाद उस रिसीवर के पास पहुंचा. जब रिसीवर के पास पहुंचा उसके बाद फिर एल्गोरिदम है, ठीक है जी, जिस एल्गोरिदम से डाटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा और डिक्रिप्ट करने के बाद रिसीवर उस डाटा को एज इट इज देख पाएगा. और रिसीवर कौन सा होगा? वो ऑथराइज्ड पर्सन. सो दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, एनक्रिप्शन की बात की, लॉकिंग का डाटा, डिक्रिप्शन की बात की, अनलॉकिंग का डाटा. और जब हम लॉकिंग और अनलॉकिंग विद द हेल्प ऑफ किसी सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम की मदद से करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. So when we're talking about cryptography basically it's a word derived from Greek word kryptos, which means hidden secrets. Which means hidden secret, यानी कि छिपे हुए सीक्रेट्स. तो ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब भी क्या है? हिडन सीक्रेट, छिपे हुए सीक्रेट्स. So cryptography is the practice and study of hiding information. So it is an process, it is a practice and study of hiding information. So it is the art or science of converting a plain intelligible data into an unintelligible data and again retransformation that message into its original form. It means it's an art and science with the help of which
हम एक डाटा को इंटेजिबल इन इंटेलिजिबल डाटा को अनइंटेलिजिबल डाटा बना देते हैं और वापस जब रिसीवर के पास पहुंचता है उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं. दैट इज बेसिकली encryption. So encryption is a basically combination of cryptography is a combination of encryption and decryption. So it provides confidentiality, integrity and accuracy. Confidential means secret, integrity means together, accurate means सही. तो ये तीन चीजें इसके अंदर आती हैं या बोलो तीन फीचर्स हैं इसके. So when we talking about cryptography, तो in a cryptography it has two different categories. One is symmetric key cryptography, second is asymmetric key cryptography. When we're talking about symmetric key cryptography, also known as a secret key, sender and receiver uses a same key and an encryption decryption algorithm to encrypt decrypt data. That is, the key is shared. So in this, when we're talking about symmetric means same. इसके अंदर क्या है, what exactly it is, there is a same key with the sender and receiver. सेंडर के पास भी वही की है, रिसीवर के पास भी सेम की, दोनों के पास सेम की रहेगी उसको अनलॉक करने के. लेट्स सपोज सेंडर इज हैविंग अ की ए, तो receiver will also have a key A with the help of which they can decrypt the data and sender can encrypt the data. Here you'll see a sender has sent a data which is encrypted with the help of a secret key, and that encrypted data becomes a ciphertext which is known as ciphertext. Again it is going to be decrypted with the same key. Okay? It means sender and receiver is having a same key and receiver will able to see the data, understand the data. So what are the advantages of symmetric key cryptography? First advantage is it's simple, easy, it's easy to manage. Second is faster, faster can be uh, done. Encryption and decryption can be done very fast. Now we're talking about disadvantages. Key must exchanges in secure way. Whenever the key is going to be shared by the sender to a receiver, it must be sent in a secured way. Sometimes बीच में वो की चुरा ली जाती है, उसकी कॉपी बना ली जाती है जिसकी वजह से बीच में डाटा अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर पाते हैं. Easy for hacker to get a key as it is passed in an unsecure way. हैकर के लिए इजी होता है भी उस की को हैक कर लेना और यूज कर लेना जिसकी मदद से वो हमारे डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है. तो दिस इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट asymmetric key cryptography, also known as public key cryptography. Sender and receiver uses different keys for encryption and decryption, namely public and private respective. It means on both ends there will be different keys. Sender will have a different key, receiver will have a different key for encryption and decryption, which is known as public and private. You will see over here, when you see in earlier diagram in symmetric key cryptography, you see there is a one key, common key. Okay, in this there will be two different keys. One is public key, second is private key. So they both have different keys. No need to share with each other. Sender will send a data. Sender data send karega. It will be encrypted with the help of public key, which will remains with the sender. When data is going to be converted, which is known as ciphertext, it will come to a receiver side, and receiver is also having a personal key, private key, with the help of which data is going to be decrypted. That is asymmetric key cryptography. So when we're talking about asymmetric encryption, cryptography is we're talking about now comes to the encryption. Asymmetric encryption uses two keys, one to encrypt data, another is to decrypt data. It means they'll have two different keys which I've shown earlier. उनके पास एक डाटा के लिए है, encrypt करने के लिए, एक decrypt करने के लिए. These keys are generated together. दोनों keys इकट्ठी generate की जाती है. One is named as public key and is distributed freely. ठीक है.
एक जो की है विच इज नोन एज पब्लिक की, जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एज अ वर्ड से पब्लिक, इट विल बी फ्रीली. एंड सेकेंड, द अदर नेम इज प्राइवेट की एंड इट इज केप्ट हिडन. तो ये वो हिडन रखी जाती है, वो सबके साथ वो फ्रीली शेयर नहीं की जाती. बोथ सेंडर एंड रिसिप्टर हैज टू शेयर their public keys for encryption and has to use their private keys for decryption. जब अब भी उन्होंने डाटा एनक्रिप्ट करना है, चाहे सेंडर है और रिसीवर है, उन्होंने पब्लिक कीज शेयर कर देनी है, बट प्राइवेट कीज दे विल हैव विद देमसेल्फ, दे विल नॉट शेयर, they'll use for unlocking a data. So when we're talking about asymmetric key cryptography, a public key cryptography, so two different ways are used. User get the key from an certificate authority. Advantage is more secured and authenticated. It is more secured and authenticated क्योंकि uh, हर एक रिसीवर के पास अलग की है, he able to unlock the data, तो it is more secured. And second is authenticated, जो authorized है वही unlock कर पाएगा, कोई और unlock नहीं कर पाएगा. And now talking about disadvantage, it's relatively complex as compared to symmetric. Symmetric की से वो ज्यादा complicated है. ठीक है, तो I have shown with the help of a diagram how it works. Given you a public key to sender, ठीक है, here it is a plain text. Sender uses a public key to crypt the plain text. ठीक है जी, with the help of public key which is given to him, उसकी मदद से उसने उस डाटा को encrypt कर दिया, which is known as ciphertext. ठीक है जी, ciphertext, sender gives a ciphertext to you. ठीक है जी, and then ciphertext, ठीक है जी, which is encrypted with the help of a public key, it is going to be unlocked. Use your private key to decrypt the ciphertext. So he'll have a different key with the help of which that data will be again converted into plain text, and receiver will be able to see that. Okay. So key used in cryptographic symmetric keys. Symmetric key cryptography, there will be one key which is kept secret. And when we're talking about asymmetric key cryptography, in this there are two keys used. One is private key which is kept with the individual, and second is public key which will be shared with everyone. So now I'm going to have a comparison. जब हम डिफरेंस की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे, द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक. द सेम एल्गोरिथम विद द सेम की इज यूज्ड फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. तो एल्गोरिथम विल बी यूज, सेम ही एल्गोरिथम यूज किया जाएगा एनक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए. वेयर एज इन asymmetric, one algorithm is used for encryption and decryption with the pairs of keys, and one for encryption and one for decryption. ठीक है, तो इन दिस एक एल्गोरिथम यूज किया जाएगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन विद अ पेयर ऑफ कीज, और वो अलग कीज दो अलग हो जाएंगे, वन फॉर इंक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन. दो कीज अलग अलग रहेंगे इसके अंदर, पब्लिक प्राइवेट, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इन दिस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, द की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट. ठीक है जी, की को सीक्रेट रखना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर सेम की ही यूज होनी है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट असिमेट्रिक, देयर विल बी टू कीज आउट ऑफ व्हिच वन हैज टू बी केप्ट सीक्रेट. ठीक है जी, विच जो जिस एक की को हमने जो सीक्रेट रखना है विच इज कॉल्ड प्राइवेट की, और जो कॉमनली शेयर हो दैट इज कॉल्ड पब्लिक. पब्लिक की के साथ हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है, और प्राइवेट की के साथ हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं. इट मे बी इम्पॉसिबल और at least impractical to decipher the message if no other information is available. It's quite difficult, अगर आपके पास कोई और information नहीं है तो आप मैसेज को encrypt decrypt नहीं कर पाएंगे. It is impossible, at least impractical, if no other information is available. So where it can be used, this can be used in defense services, securing data manipulation, e-commerce, business transaction, internet payment system, user identification system, access control, and data security. So here we're talking about a comparison. तो comparison with two categories of cryptography. ठीक है,
In upper one, you will see that there is a common key between encryption and decryption, and in asymmetric there is a different key. You see in encryption there is a pink key, ठीक है, और डिक्रिप्शन देयर इज अ ब्लैक की। दोनों कीज अलग अलग हैं। अगर ऊपर देखेंगे तो सेम की है, नीचे देखेंगे असिमेट्रिक के अंदर एक पिंक की है और ब्लैक की है। पिंक के साथ हम इंक्रिप्शन कर पाएंगे और ब्लैक के साथ डिक्रिप्शन कर पाएंगे। और पिंक वाली की को हम बोलेंगे पब्लिक की और डिक्रिप्शन वाली की को बोलेंगे हम प्राइवेट की। Sender and receiver. So this is what exactly difference between symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography. So now we are talking about differences between symmetric and asymmetric key cryptography. So we are doing a differences between symmetric key and asymmetric key. So first of all, we're talking about characteristics. Key used for encryption and decryption. In symmetric key cryptography, same key is used. सिमेट्रिक की के अंदर सिर्फ सेम ही की यूज की जाती है, वेयर इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक वन की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड अनदर डिफरेंट की इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। दो कीज यूज की जाती है, हमने पहले भी बात की है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, स्पीड ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इन केस ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज वेरी फास्ट, बहुत तेजी से काम होता है बिकॉज इट्स हैविंग अ सेम की। बट वेयर एज इन केस ऑफ asymmetric key cryptography, it's slower because both are having there is a common key for encryption but there is a different key for decryption। अलग अलग कीज हैं, encryption के लिए common key है, decryption के लिए which is known as private key वो अलग अलग है। size of resulting encrypted text usually same as or less than original text size। जो original text size है या तो उतना ही साइज रहता है या उससे कम हो जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जो टेक्स्ट का साइज है आफ्टर इंक्रिप्शन ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल टेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट नोन कीज। बोथ पार्टीज शुड नो द की इज सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन, इसके अंदर दोनों के पास सेम कीज का होना जरूरी है, पता होना चाहिए दोनों पे। वेयर इन केस ऑफ असिमेट्रिक की, only either one of the keys is known by both the parties in public key encryption। उसमें से पब्लिक की दोनों को पता होगी बट जो प्राइवेट की है उनके पास अलग अलग रूल जिसकी मदद से वो डिक्रिप्शन करेंगे यूजेज। एंड दिस की हैज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेट्स, उसको की को सीक्रेट रखना जरूरी है। वेयर एज इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। कॉन्फिडेंट में साथ में डिजिटल सिग्नेचर्स यूज किए जाते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। Now, coming to the next part, applications. It is applied in different places। First is defense services। डिफेंस में यूज किया जाता है। सिक्योर डाटा मैनिपुलेशन, भाई डाटा के अंदर कुछ चेंजेस करना सिक्योरली करना चाहते हैं। टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स, इन ई कॉमर्स इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इंटरनेट पेमेंट के लिए, यूजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के लिए, किसी चीज को एक्सेस का कंट्रोल रखने के लिए, डाटा सिक्योरिटी के लिए, इन मेनी मोर प्लेसेस this technique is used। With this, this topic is finished। Thank you very much, God bless you all। If you have any query, just feel free to contact at 981403087 and God bless you all। Thank you।